All right, so this is summer 2020. Let's do this paper. The first thing that the question is asking us about is showing the coordinates of points where the curve meets the axis. So in this one, you just have to understand that they're asking us about the roots. And how do you find the roots? The roots are what you find when you put the equation equal to 0. So when you put this equation equal to 0, there will be 3 points. तो एक तो हमें वो 3 roots मिल जाएंगी. So we have to clearly show them. Okay, that's the first step. What's next? Now we know that this is absolute valued curve. So पहली बात तो ये कि इसको equal to 0 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x equals to 2. You don't have to draw it to scale, so x equals to 2, x equals to -1 and x equals to -2. That's the first thing you get. Secondly, I'm asking you to ignore the absolute value for now. Second thing that we know is that this is a positive curve, which means cubic equation में इस तरह की curve होती है अगर positive हो और negative इस तरह की होती है. तो बेसिकली यू हैव टू ग्राफ इट लाइक दिस कि ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा और आई एम सॉरी, या लाइक दिस, यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा और यहाँ से गुजरेगा. और ये -1 है, वो +2 है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस वाई इंटरसेप्ट. वाई इंटरसेप्ट हमें कैसे मिलेगा? इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें. सो -2 टाइम्स 1 इज -2, -2 टाइम्स +2 इज -4. सो ये -4 होगा. तो हमारे पास ये कर्व बन गई. अब हमें इसको इन्वर्ट करना है सो दैट वी कैन गेट द मॉड्यूलस. सो मॉड्यूलस के लिए विल ड्रॉ द सेम कर्व. ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, बट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द कर्व, पॉजिटिव पार्ट ऐसे रहेगा. नेगेटिव पार्ट ऑफ द कर्व, ये जो वाई एक्स एक्सिस के नीचे वाला है, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो ये ऐसे हम ज्वाइन कर देंगे, इसको भी ऐसे ज्वाइन कर देंगे. You don't really have to make sure that it's drawn to scale. बस एक चीज का ख्याल रखिए कि ये -4 है तो ये +4 बन जाएगा, and you will erase the black part, and that's the curve. They don't have to be equal. If you want, you can make these humps of different height. It's totally your choice. Doesn't really matter as long as your graph is of the same shape that's required. और ये इस तरह हमारे पास graph बन गया. You erase the part that's below it. So important values here are, how do you find what order it is? आप x को s से multiply करेंगे. So there are 3 x's, so that means it is of order 3. आपकी curve इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए. Then to find the y-intercept, we multiply just the numbers. That gives us -4, and because it's modulus, वो +4 बन जाएगा. और हमारी shape को भी हमने modulus की वजह से reflect कर देना. अगर modulus ना होता तो हमें reflect करने की जरूरत नहीं थी. All right, moving on. The volume of a sphere of radius this is given by this. Radius of a sphere is increasing at the rate of 0.5. So the first thing you should do is translate this English language sentence to maths. वो कह रहा है rate of the radius is increasing at a rate of 0.5. So that means dr by dt is 0.5 centimeters per second. Find in terms of pi the rate of change of volume. dv by dt वो हमसे मांग रहा है और हमें उसने वॉल्यूम दे दिया है 4/3 पाई आर क्यूब. और वो कह रहा है dv by dt at r equals to 0.25. ये हमारी इंफॉर्मेशन है, ये वो सारा कुछ है जो हमें गिवन है. So we have to find this dv by dt. So let's first use chain rule. dv by dt हमारे पास इस वक्त इस वजह से नहीं है क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करती है रेडियस पर, लेकिन रेडियस डिपेंड करता है टाइम पर. तो इसका मतलब है we can make an equation where volume depends on the radius and radius depends on the time. And if we have this, we will be able to find dv by dt. अब dv by dr हमें कैसे मिलेगा? We'll simply differentiate this thing. So 4/3 pi is a number, so it will remain as it is. R cube का derivative करेंगे, the power multiplies, r power 2 हो जाता है, और इस तरह से हमारे पास this 3 cancels out. You are left with 4 pi r square. Okay. At r is equal to 0.25, that's important. So at r is equal to 0.25, this becomes dv by dr, it becomes 4 pi 0.25 squared, which gives you pi by 4 as your final answer. This is pi by 4 centimeter cube per centimeter, which means pi by 4 centimeter squared. We'll just plug this in here. dv by dr is pi by 4, dr by dt is 0.5. That gives me pi by 8 centimeter cube per second as my dv by dt. The units aren't really required.
what's required is you need to know how these thing is related and how you can use it. Okay, all right, moving on. Find the first three terms in the expansion of this thing. All right, so first three terms. We'll simply apply the binomial theorem. We know that power is 6. This is our a, this is our b. So हमारे पास general term क्या होती है? NCR, a power n minus r, b power r. So we'll just apply that. The first term becomes 6c0, a to the power 6, b to the power 0 plus 6c1, a to the power 5 because a की powers कम होती जाती हैं, b to the power 1 plus 6c2, a to the power 4, b to the power 2. Notice that I'm using the minus sign with b so that we can include this. So इसको जब हम simplify करते हैं, this simply becomes 4 power 6 and this becomes just give me a minute, let me solve it. So 6 into 4 power 5 तो ये बन जाता है minus 384. So this becomes minus 384x and this thing becomes 15. So 15x squared. And these are the first three terms that we needed. Next, find the term independent of x. Independent of x के लिए मुझे यहाँ पे ये देखना है कि how do I make sure कि मेरी left term और right term जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करके कोई उनमें x नहीं आए. x ना आने की ऑप्शन क्या है? x ना आने की ऑप्शन ये है कि मेरे पास x की सारी पावर 0 हो जाए. ठीक है, अब इसको करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं. एक तरीका जो बड़ा आसान है इसको करने के लिए वो ये है कि यू कैन थिंक ऑफ इट दैट दिस थिंग 4 minus x over 16 power 6 इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ x हमारे पास ये 4 power 6 वाली टर्म है. इसका मतलब है अगर यहाँ पर 4 power 6 वाली टर्म दूसरी साइड पर 4 power 6 वाली टर्म से इंडिपेंडेंट हो जाए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. अब दो तरीके हैं, एक ये कि आप जनरल टर्म निकालो पूरे सीक्वेंस के लिए which will be some work which isn't justified by this many marks. The other option is कि हम इसको expand कर लें because it's only to the power 2. So मैं यहाँ पर 4 minus x power x divided by 16 power 6 को मैं वैसे ही लिख रहा हूँ जो हमने निकाली है. So इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि ये पावर 3 तक हमने कर लिया है. इसको हम एक्सपैंड करते हैं. दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस 2ab. ab जब हम करेंगे x टाइम्स 1 over x तो दे x कैंसल्स आउट प्लस b स्क्वायर्ड so 1 over x squared. Okay, so this cancels out. So here you go. Now when can you get term independent of x? You can get a term independent of x if I multiply 4 power 6 with this because यहाँ पे भी x नहीं है वहां पे भी x नहीं है. Or you can get term independent of x if I multiply this with this because x square से cancel हो जाएगा. And that is the only two possibility which will allow me to do that. So I'll simply do this. 4 power 6 times minus 2 plus 15x squared times 1 over x squared. Everything else I'll ignore. So this gives me 4 power 6 times minus 2 is 8192 plus 15. That gives me 8177 negative. That is my coefficient and that's my answer. Okay, any questions on this? No, sir. Okay, great. Find how many different 5-digit numbers can be found using the digits. These, if each digit may be used only once. So this is really simple. You have what? 6 numbers and you're choosing 5 of them. So if you choose 5 numbers from 6 and you know that you cannot repeat them and you know that they have to be the order does matter in this case. So what will it be? So एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम कहते हैं कि अच्छा
फर्स्ट नंबर हम 5 स्लॉट्स ले लेते हैं, तो हमारे पास 5 स्लॉट्स हैं और हमारे पास 6 ऑप्शन है फर्स्ट के लिए. सो वी हैव 5 डिफरेंट नंबर्स. सो फर्स्ट के लिए हमारे पास 6 ऑप्शन है, सेकंड के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है, 4, 3 and 2. So 6 multiplied by 5 multiplied by 4 all the way to that is what my options are, because I have I have to choose 5 numbers from 6. ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, you can simply use a calculator to do this. This is called factorial. So 6 factorial over 2 factorial, sorry, ये हमारे पास आ जाएगा 720. So these are different possibilities that we have of getting a number. So this is 720. All right. The method doesn't matter because it's only a 1 mark question. You can use permutation, you can use combination in this case, but this is only 1 mark question. So answer is what matters. How many numbers found are not divisible by 5? Okay, so that means if you don't want a number to be divisible by 5, then your options are a little more limited now, because now on the last term you cannot have a 0 or 5. 0 isn't even in the possibility, so you can't have 5 here. So let's just put there. So if you can't have 5 here, that limits our options to just 5 different options here. Remember, this 5 is not the number in there, this is the number of options that you have. So you cannot have 5 now, you can only have 1, 2, 3, 7 or 8. So 5 options यहाँ पे आ गई, बाकी जहाँ पे जो मर्जी नंबर आए. So that means now you have how many options for this one? If you're not choosing 5, then you have 5 numbers left, because यहाँ पर उनमें से एक आ जाएगा, 6 में से एक यहाँ पर आ गया, बाकी 5 numbers उनमें से 5 यहाँ पे में से कोई भी आ सकता है, 4 यहाँ में कोई भी आ सकता है, 3 and 2. So that's our option now. 5 times 5, 4, 3, 2. तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 600. These numbers are the ones that are not divisible by 5, because इनमें यहाँ के लिए हमारे पास 5 नहीं आ सकता, बाकी ऑप्शन हमारे पास there are 5 different numbers we can choose. Okay, another way to do this, which is much more simpler than this, you can see that these numbers are 6 in total, right? That means 720 में से there will be only 1/6 of the numbers that are not divisible by 5. तो हम एक और काम ये भी कर सकते हैं कि हम कर सकते हैं कि 720 में से 1/6 not divisible है, तो 5/6 divisible है. So you can do this. That will give you the same 600 again. क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस 6 हैं, तो 6 में से एक वाले सेलेक्ट नहीं कर सकते, बाकी 5 ऑप्शंस वाले they are open to us. How many of the numbers found in are even and greater than 30,000? अब यहाँ पर उसने हमें बहुत सारी 3 रिक्वायरमेंट्स दे दी हैं. First requirement is that they must be formed from these 6 numbers. Part 1 की बात कर रहा है, part 2 की बात नहीं कर रहा है. Divisible by 5 doesn't matter here. Okay, so हमारे पास एक तो ये ऑप्शन होगी. दूसरी ऑप्शन ये होगी कि they must be greater than 30,000. Greater than 30,000 का मतलब ये है कि हमारे पास the leading number, the first number cannot be 1, the number cannot be 2. Okay? तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? अब हमारे पास ऑप्शंस ये हैं कि हम इसे स्लॉट दोबारा बना लेते हैं. अब इन स्लॉट्स को लेट्स कंसिडर. ग्रेटर देन 30,000 होने का मतलब ये है कि यहां पर 3, 5, 7 या 8 आए, लेकिन साथ ही उसने ये भी कह दिया कि दे मस्ट बी इवन. तो हमारे पास अब एक ऑप्शन ये है कि यहां पर 8 आ जाए. Here we have 8. In which case our options here for the first leading number are only 3. या 3 आएगा या 5 आएगा या 7 आएगा. So 3 options है, 3, 5, 7 में से कोई भी आ जाए यहाँ पे, और यहाँ पर 8 ही आए, तो यहाँ पे आने की एक पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज हैं. अब बाकी नंबर्स को फिल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है. We have 6 numbers in total. 8 is used up. Out of the remaining 5, we have used 1 here. So we have 4 options here, 3 options here, 2 options here. Does that make sense? So that means if you have 8 as the last digit, then your options are 3 times 4 times 3 times 2. So that is 6 times 12. That is 72 different numbers which have 8 in the first number. Acha. What if we don't use 8 here? If we don't use 8, then we can only have 2 here. क्योंकि that's the only other possibility of having an even number. तो यहाँ पे फिर भी 1 हो गया. तो अब 2 use up हो गया. अच्छा, अब यहां पर हमारे पास कितनी ऑप्शन है? या 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, या 8 आ सकता है. तो देयर आर 4 ऑप्शंस है
3, 5, 7, 8 में से कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकते हैं. And then if we use one number here, we're left with 4 numbers. So that is 4, 3, 2 different options here. So that means we have 16, 4 times 4 times 3 times 2. That is 16 times 6, 96 different numbers here. So total numbers that are even, that are greater than 30,000 and made from only 5 of these numbers, that is 72 plus 92. Sorry, 96. So 72 plus 96. That is 168 total options that we have. ठीक है? I have a, मैं usually अपने final answer को ऐसे square कर लेता हूँ. आप भी इस तरह कर सकते हैं if you want. That will allow the examiner to know कि अच्छा this is the final answer that the student is trying to give me. Okay. The number of combinations of n items taken 3 at a time is 6 times the number of combinations of n items taken 2 at a time. Interesting. अच्छा, वो कहना क्या चाह रहा है हमसे? वो कहना चाह रहा है कि n items taken 3 at a time, इसका मतलब है nc3, and n items taken 2 at a time, इसका मतलब है nc2. और वो हमसे कह रहे हैं कि nc3 is 6 times nc2. So इक्वेशन बन गई हमारे पास, nc3 equals 6 nc2. ओके, अब यहां पर हमें nc3 या nc2 की डेफिनेशन को समझना है कि nc3 क्या होता है. nc3 बेसिकली होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और nc2 होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि मुझे तो ये फॉर्मूला याद नहीं है. तो कोई मसला नहीं है, आपके पास एग्जाम में ये डिफरेंट फॉर्मूलाज गिवन होते हैं. तो ये चीज आप देखें, दिस नंबर है, this here means NCR. तो you can take the formula from here. ठीक है, R की जगह पे 2 था और R की जगह पे 3 था हमारे आंसर में. So we just simply use this, and now n factorial cancels with n factorial, and then we are left with what? N minus 2 whole factorial equals to 6 into n minus 3 whole factorial. और यहाँ पे 2 factorial दोबारा आ जाएगा और यहाँ पे 3 factorial दोबारा आ जाएगा. Okay, one more interesting thing. What is n minus 3 factorial? It's basically n minus 3 times n minus 2 times n minus 1 times whatever. चलते चलते 0 पे आ जाएगा. ठीक है, n factorial और इस तरह चलता जाएगा. अब यहाँ पे आप एक चीज देखें कि n minus 3 के अलावा ये सारा ऑप्शन किसके बराबर है? n minus 2 फैक्टोरियल के बराबर है, क्योंकि n minus 2 फैक्टोरियल भी यही होता है, n minus 1 n इस तरह चलता जाता है. तो मैं इस पूरे को इस पूरे से कैंसिल कर सकता हूं. तो आई एम जस्ट लेफ्ट विद 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है. सो दैट गिव्स मी 2 फैक्टोरियल व्हिच इज जस्ट 2 into 6 n minus 3 into 3 factorial which is again 6. I can use it 3 times 2 times 1 6. तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा that 2 over 36 equals to n minus 3. so मेरे पास जो भी इसका फाइनल आंसर आता है वो मुझे मिल जाएगा. ठीक है, so that's how I know this, unless I made a mistake here somewhere. I feel like I made a mistake somewhere. Let me correct it. अच्छा, यहाँ पे हम एक और चीज यूज कर सकते हैं. Instead of using this formula, this is the formula of factorial that we can use. That's much more simpler than this one. I can be like that this is n into n minus 1 into n minus 2 over 3 factorial, and this will be n into n minus 1 over 2 factorial. We can use this formula as well. ठीक है, उसकी वजह ये कि n minus 3 factorial और यहाँ पे n minus 2 factorial वो सारे इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे,
And that this gives me that n and n minus 1 cancel out. I'll left with n minus 2 into 2 equal to 36. 2n minus 4 is equal to 36, and 2n is equal to 40, and n equal to 20. Yeah, so पीछे वाले में कोई algebraic issue था. This is the final answer that we should be able to get. All right, moving on. Find the range of f. Range क्या होता है? Range is the values of y that you can get. How do you get values of y? Just find using this thing. So you can use the graph, you can use the completing the square, any method that you know to find out the smallest or the greatest value of this. अब हमें पता है कि ये ग्राफ जो है वो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ हमारे पास इट्स गोइंग टू बी अ u ऐसे बनेगा, और u की वैल्यू क्या है कि वो उसका मिनिमम पॉइंट बनेगा -3/2 पे. ठीक है, दैट्स व्हेन योर y एक्सिस इज 0, राइट. सो वो इसका बन जाएगा, लेट मी सी, we'll have to ग्राफ दिस. तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट इसका 9 बनता है. सॉरी, ग्राफ ऐसे बनेगा लेकिन उसका y इंटरसेप्ट 9 बनेगा. तो I'll just draw this. तो ये y इंटरसेप्ट इसका 9 है, which is also its minimum point. तो ये 9 यहाँ पे टर्निंग पॉइंट बन जाएगा. How do I know this? I know this because मेरे पास, मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ. This becomes 2x plus 3 and 2x plus 3. That means there are basically it's a symmetrical graph. तो इसकी शेप ऐसे स्क्वायर बनेगा. तो ये पावर 2 है, तो पावर 2 का या u होता है या n होता है. पॉजिटिव हो तो u होता है जो कि ये है, और यहाँ पर ये 9 होगा because 3 times 3. That's the number without x. So that means my graph will always be greater than 9. अच्छा, इसमें ये बात भी उसने की हुई है. इसका मतलब है कि हम नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला पोर्शन सारा डिलीट कर देंगे. तो हमें बेसिकली ग्राफ कौन सा चाहिए? सिर्फ पॉजिटिव साइड वाला. तो बेसिकली ये पॉजिटिव साइड वाला ग्राफ रहेगा, नेगेटिव वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि उसने बोल दिया कि दैट x कैन नॉट बी लेस देन 0 और x इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमें ग्राफ जो है ये इट इज ग्रेटर देन 9. तो हम कहेंगे f of x इज ग्रेटर देन 9, और इक्वल 9 भी बोल सकते हो आप. ग्रेटर देन इक्वल टू 9 इज द आंसर है. Explain why it has an inverse. Because it's a 1-to-1 function. ठीक है, हम जब भी हमसे वो पूछेगा कि इनवर्स क्यों हो सकती है किसी चीज का, तो वो 1-to-1 फंक्शन होता है, तभी उसका इनवर्स हो. ठीक है. अच्छा, आगे वो कह रहा है फाइंड f इनवर्स. तो f इनवर्स के लिए आपको क्या करना है कि f of x, let f of x equal to y. So y equals 2x plus 3 whole squared. Take the square root, but this time we are going to not use the negative part. ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना है. तो square root on both sides, not taking the negative part. That gives me square root y minus 3 whole over 2 is x. Interchange it again and you will get f inverse of x equals square root x minus 3 over 2. And that is my final answer that I have for the inverse. तो मुझे मिल जाए. State the domain of f inverse. अब इसमें आप ये चीज ध्यान में रखो कि जो f की रेंज होती है वो f इनवर्स की डोमेन होती है. क्यों? अगर मैं ग्राफ इसको बनाना चाहूँ ना, तो ग्राफ में सिंपली ये 9 है, तो मैं 9 से इसको स्टार्ट करके ऐसे बना लूंगा. मैंने इसको बेसिकली रिफ्लेक्ट करना है टू फाइंड द इनवर्स. तो ये f of x है और ये f inverse of x है. But even if you don't know that, just remember that domain of f is in range of f inverse and range of f is domain of f inverse. तो इसका मतलब है उसकी रेंज थी f of x is greater than equal to 9, तो इसकी डोमेन होगी x is greater than equal to 9. Okay. Given that g of x is ln of x plus 4, find the exact solution of f g of x equal to 49. अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? पहले आप x को g में ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको f में ऐड करेंगे. तो x को g में ऐड करके तो उसने हमें दे दिया है. अब इसको हमने f में ऐड करना है. f क्या है हमारे पास? 2x plus 3 whole squared. So let me write that. So 2x plus 3 whole squared. This is my f. Now, if I want to plug in g here, so I'll simply put g where x is. So this becomes 2 ln x plus 4 plus 3 whole squared. Everything else remains as it is. It's just that I've replaced x with g.
All right, and this thing is equal to 49. So I'll just solve this. We have to solve it for x greater than equal to 0. Okay, so we'll just solve it like this, that 2 ln x plus 4 plus 3 is equal to square root of 49, which gives me plus 7 and minus 7. Now I'm not sure whether I will end up with a positive answer at the end or not, so I will still, just to be sure or just to be cautious, I'll still go with minus 7. It is possible that we might have to reject it later on, but it's better safe than sorry. So now minus 3 on both sides, so this gives me 2 ln x plus 4 is equal to 4, and 2 ln x plus 4 equal to minus 10. It's unlikely that I'll be using this in the future, but let's still go on. Ln x plus 4 equals to 2, and ln x plus 4 equals to minus 5. To get rid of log, you have to take inverse so of log, which is power of e. So ये ln cancel हो जाएगा, मेरे पास बन जाएगा x plus 4 is equal to e power 2, and this will come x plus 4 is equal to e power minus 5. Now you see the importance of taking it like that, because now you will see that e power minus 5 is a positive number because it is 1 over e power 5. So my final answer becomes e power 2 minus 4, and here e power minus 5 minus 4. Let's see which one is a positive answer and which one is a negative answer. So if I plug this in the calculator, the first one is a positive answer. So this is my option that I will consider. And if I took that in the calculator again, you will see that the negative answer is a negative one. So I will reject this one. So this is not the answer. That is my answer. So this is my final answer. And that is what I'll consider. All right. Diagram shows the straight line this and part of the, इसमें कोई question कहीं पे हो तो पूछ लीजिएगा. All right. The diagram shows a straight line this and part of the curve this. The straight line intersects this. सारा कुछ हमें graph में बता दिया. Find the coordinates of each of the point A and B. A and B are basically the points where the curve intersects. B is where it intersects this curve and A is where it intersects the x-axis. So दोनों के लिए हमें अलग-अलग solve करना है. X-axis को solve करने के लिए तो हमें पता है कि y 0 हो जाएगा. That means 2x plus 0 is equal to minus 5. So that means x equals to minus 2.5. So that means A is minus 2.5 and 0. So I found A. For B, I have to do a little more than that. I will need to solve them simultaneously. So 2x plus y equals to minus 5 and xy plus 3 equal to 0. So you can make y the subject or x the subject, is totally your choice. I'm going with this. So minus 2x minus 5. Plug that in there. So I'll get x into minus 2x minus 5 plus 3 equal to 0. So that's simple algebra from now on. That gives me minus 5x plus 3 equal to 0. You can use many different ways of solving this, many different ways. You can use quadratic formula, you can use Milton breaking, you can use simple factorization, it's your choice. So I'm just going to solve it using a calculator for now, because I think everybody knows how to do this. So that gives me x1 equals to half, and the other option is it is equal to minus 3, unless I'm so we can clearly see that minus 3 is not the one that we're considering here. So x power half is the one, because b आपके सामने positive है, वहाँ पे x की value positive है. So we'll consider that x equals to half, and when x is half, plug that back in here to find what y is. Y comes out to be minus 2 times half minus 5. This gives me minus 6. So that's my answer, that b is half and minus 6. Okay. All right. Find the area of shaded region, giving your answer in the form this. Okay, let's see. Shaded region, first of all, हमें नजर आ रहा है कि वो below x-axis है. Secondly, हमें नजर आ रहा है कि वो दो portions में, एक portion है the triangle that is formed using A, B, and x-axis. So if I were to draw a straight line here, you will see that this is a triangle on the left side of this, right? So हमें ये triangle का area निकालना है. ठीक है, so that's one कि हमें यहाँ पर ये बन जाएगा. And second option is that it is the area between the curve xy plus 3 and x-axis. Okay, now how do you know what the limits are?
एरिया निकालने के लिए अगर किसी भी कर्व का एरिया निकालना है तो हमें उसका इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। सो ट्राइंगल का एरिया तो बहुत आसान है, हमें b की वैल्यूज पता है, b यहाँ पे हाफ है और यहाँ पर इसकी वैल्यू है -5/2। तो the height of the curve, height over here is -6, so that means this length is 6 and this length is again I think it is 3, right? Because 2.5 on that side and half on that side. So the area of the triangle comes out to be half times 3 times 6, which is equal to 9. So that's the area of my triangle. Okay. Next we have to find the area that is governed by the x-axis, the two lines half and 1 and xy plus 3. अब xy plus 3 को हम इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि xy plus 3 can simply be converted to y equals to -3 over x. ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना ज्यादा आसान है हमारे लिए, तो we will simply do that. So our limits are from half to 1 -3 over x dx. Now -3 over x, we know that if you have derivative on the top, so 1 over x is the derivative of ln x. तो इस तरह हमारे पास ये एरिया बन जाएगा -3 ऐसे का ऐसे बाहर आ जाएगा ln of x, because 1 over x का इंटीग्रल ln x होता है। यहाँ पे हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे हाफ से लेके 1 तक, ठीक है, और ये पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि हमारे पास एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हमारे पास ये पॉजिटिव होगा। तो दिस कम्स आउट टू बी 3 ln 1 minus 3 ln half, ठीक है, और फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 3 ln half, दैट्स इट, क्योंकि मेरा एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो 3 ln half इज व्हाट माय एरिया इज। सो टोटल एरिया (9). दिस इज बिकॉज इट्स -3 ln half, तो ये मेरा फाइनल बन जाएगा ln 8। तो मुझे फाइनल आंसर बनेगा 9 plus ln 8। Okay, how do I get ln 8? This is using power law. This comes over here, ln half की power -3, that means ln 2 की power 3, which is ln 8. Okay, all right, moving on. Given that y is this, show that derivative is this. हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास दो formulas multiply हो रहे हैं, दो functions multiply हो रहे हैं. So we can keep one as u and the other one as v. So they become this, and now I'll just take the derivative here. So u prime या du by dx comes 2x, and v prime comes out to be half into 5x plus 2 power minus half, क्योंकि half minus 1 is minus half, multiplied by 5x plus 2 का derivative 5, which comes out to be 5 over 2 square root 5x plus 2. Now I will apply the formula which says that uv prime plus vu prime, basically derivative of this whole function. So I'll just plug in the values. U is x squared minus 1. V prime is 5 over 2 square root 5x plus 2 plus v was 5x plus 2 into u prime, which was 2x. Now because they have asked us to show it in this form, we have to make sure कि हम इसको पूरा simplify करें. So this becomes, take the denominator like this. This remains as it is, so 5x squared minus 5 plus 2x times 2 is 4x, and 5x plus 2 whole square root का जब square ले लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा. तो final answer comes out to be 5x squared minus 5 plus 4x into 25x squared plus 20x plus 4. You further simplify this and you will eventually show this, that this is in the form of ax squared plus bx plus c, जहां पर a हमारे पास यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना होगा इसको, and we will get a final answer. Okay, okay, there has been a mistake here. ये स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, हमारे पास स्क्वायर नहीं आएंगे यहाँ पे, हमारे पास सिंपली 5x plus 2 आएगा.
So that gives me 5x squared minus 5 plus 4x into 5x plus 2, which becomes 20x squared plus 8x over 2 square root 5x plus 2. That gives me 25x squared plus 8x minus 5 over this whole thing. And that's how I know what A is, what B is, what C is. Find the coordinates of stationary point of the curve this for x greater than 0. Give each coordinate to two significant figures. यही चीज लेंगे और उसको हम equal to 0 put कर देंगे because we want stationary points. So we have the derivative here, 25x squared. By the way, if somebody makes a mistake in the previous part, they can use the same equation that they have. They will only use marks in the previous part, not this part. Okay, so this goes here, cancels out because anything multiplied with 0 is 0. So I'm left with 25x squared plus 8x minus 5 equal to 0. Now this is again a quadratic equation. We know how to solve them. You can use any of the 4 methods that we have. So I'll just plugging it in and I will end up with x equals to 0.315 and notice that they have asked for two significant figures. So हम इसको 0.32 लिखेंगे. And the second one is minus 0.63 and that's my answer. You have to show steps here, okay, but just to save time I'm not doing that. All right, determine the nature of this point. Stationary points के nature निकालने के दो methods होते हैं. एक मेथड है कि हम नंबर लाइन बनाएं, उस पे देखें कि अच्छा ये है 0.32, ये है 0.63 माइनस में. We pick a value from here, we pick a value from here, we pick a value from here. और हम डेरिवेटिव में उसको ऐड करें, उसमें प्लग इन करें और उसका साइन देखें. एक ही ऑप्शन और उस साइन से हमें पता लग जाएगा कि वो राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है, क्या. दूसरी ऑप्शन है कि हम सेकंड डेरिवेटिव ले लें. यहां पर सेकंड डेरिवेटिव लेना भी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हमारे पास एक बहुत वियर्ड सी इक्वेशन है. सो द इजी वे इज टू जस्ट प्लग इन अ वैल्यू है. सो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ. सो 25x squared plus 8x minus 5 over 2 square root 5x plus 2. So let me pick random values. So let me pick -1 here, 0 here, and 1 here. I'm plugging those in. When I put 0 in here, ठीक है, -1 पे at x equal to -1, what do I get? I get 25 minus 8 minus 5 over 2 square root minus 3, which makes no sense. ठीक है, तो मेरा यहाँ पे यानी कि ये ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ठीक है. Secondly, why can't I do this? Because अगर मैं क्वेश्चन के शुरू में जाऊं तो मुझे उसने बोला था x is greater than 0. तो इसका मतलब है -1 वाला तो मैं ले ही नहीं सकता, मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा, ये -0.63 वाला. तो मैं 0 के लिए ट्राई करता हूँ. एट x इज इक्वल टू 0.5 कर 0.5 ज्यादा हो जाएगा, 0.1 ले लेते हैं. 0.1. So 25 into 0.1 squared plus 8 into 0.1 minus 5 over 2 into 5 into 0.1 plus 2. When you do that, you will see that you are ending up with, let's see, you're ending up with a negative value. The value doesn't matter, but you'll end up with a negative value. Similarly, when you put x at x equal to 1, you do this and you'll end up with a positive value. So you can see that over here the gradient is negative, over here the gradient is positive. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शुरू में आपका पॉइंट ऐसे फॉल कर रहा था और इस पॉइंट के बाद वो राइज करना शुरू हो गया. तो जब ऐसा हो, जब आपका ग्रेडियंट फॉल कर रहा है और फिर उसके बाद राइज कर रहा है, दैट मीन्स कि आपका पॉइंट इज मिनिमम. और अगर आपका ग्राफ यहाँ से पॉजिटिव हो रहा होता है और यहाँ से नेगेटिव जा रहा होता है, इसका मतलब है ये मैक्सिमम है. बट वी डोंट हैव दैट हियर बिकॉज आवर x कैन नॉट बी लेस देन 0. So we will reject this point and we will say that it is minimum on the other point. We still have 3 questions to go. So I will solve and share the solutions with you later. I have another class now. Let's try again next time हम class time पे start कर लें so that we can complete the paper in the 1 hour that we have. Okay, sir.